Hello students, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture of network analysis, I am going to solve some numerical based on the Thevenin's theorem. Actually, I am going to solve 3 or 4 numerical based on that. Clear? So, and I have to finish it within a half an hour. So I may be quite faster also, but if you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can see this video twice, so that concept will be clear. Okay. Anyway, I'm going to solve the numerical. This is the numerical number 1. Find the current through 5 ohm resistance by Thevenin's theorem. Okay. So I have given find the current through 5 ohm by Thevenin's theorem. Okay. So this is 5 ohm. First step is what? Step number 1. क्या है? Remove RL 5 ohm and find VOC. We will remove this by opening it. Clear? So point A and B will be open circuited. So this will be what? 10 volt source. 1. We have to find equivalent resistance between A and B. Right? That is VOC we have to find. This is 2. This is 4. And this is the current source of 5 ampere. It is clear? Now you can ask, what about the 10 ohm? I told you already, anything in parallel with the voltage source, it is redundant. Voltage source के parallel में 10 ohm था. आप चाहो तो if you want you can remove it. It will not affect the result. That is redundant. क्योंकि यहाँ का potential पहले भी 10 था, यहाँ भी 10 था, यहाँ भी 10 है, तो it will not affect the result. So if you want you can remove it. Clear? So I am removing this 10 ohm resistance. This is 1 ohm. This is 4 ohm. Okay, 5 ampere like that. So VOC I had to find. VOC मतलब this is connected to ground. इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल निकालना है. That is VOC. इसका मतलब है you can start from here to here. You want the current through 1 ohm. अगर आपको current through 1 ohm मालूम है, you can find VOC. कितने लूप हैं? एक लूप ये है, I am taking I1. Second लूप ये है, I am taking I2. We have 2 loops. I am taking 2 loop currents. Okay. So I1 is flowing in 1, 2, 4, 7 I1. KVL लिख रहा हूं मैं. Maxwell loop current method. So loop 1 में क्या है? I1 कहाँ फ्लो हो रहा है? 1, 2, 4, 7 I1. At the same time 4 में I2 भी है. So minus 4 I2 because this is downward, this is upward. Minus 4 I2 equal to this assume direction minus से plus equal to क्या होता है? Plus 10. Loop 1. We can't write the KVL in the second loop. Why? Because in the second loop we have a current source and we can't write. So since I2 is known, what is I2? Equal to minus 5 ampere. Is it correct? Because this 5 ampere is going upward or I have taken I2 downward. So I2 equal to minus 5 ampere. मैं यहाँ put कर रहा हूँ value को. So from equation 1, 7 I1 equal to 10 और ये 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 और I2 की वैल्यू कितनी है? I2 की वैल्यू कितनी है? माइनस 5. आर यू गेटिंग इट? 7 I1 इक्वल टू 10 और ये माइनस 4 I2 वहां जाएगा तो प्लस 4 I2 और I2 इज माइनस 5. So it is minus 20 plus 10. So you will get minus 10. So I am getting I1 equal to minus 10 upon 7. Okay, so 10 upon 7. 10 divided by 7. I am getting minus 1.428. Minus 1.428. So minus 1.428 ampere. I got it. I1. इसका मतलब है आपने ऐसा डायरेक्शन आपका ऐसा लिया है ना, ऐसा, इसके लिए क्या है? माइनस. इसका मतलब एक्चुअल करंट कैसे आ रहा है? ऐसा 1.428. इज इट क्लियर? डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन के लिए करंट माइनस है, so actual current ऐसा आ रहा है. Anyway, so I am going to find VOC. Current ऐसा आ रहा है, ऐसा, और always current flows from higher potential to lower. So this end is higher, this end is lower.
करंट कितना है 1.428, I1 इक्वल टू 1.428. सो VOC इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं. ओके, सो VOC इक्वल टू व्हाट, फ्रॉम हियर टू हियर कुछ नहीं, नथिंग. यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, नो चेंज. फ्रॉम हियर टू हियर माइनस से प्लस क्या होगा, राइज कितना 10 वोल्ट, माइनस से प्लस 10 वोल्ट यहाँ आ गए. यहाँ से यहाँ क्या होगा, माइनस से प्लस अगेन राइज कितना 1 इंटू 1.428. प्लीज मैंने ये डायरेक्शन के लिए माइनस, इस डायरेक्शन के लिए प्लस है, तो डायरेक्शन से क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना 1.428, बट डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, मतलब दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर एंड. सो यहाँ से यहाँ क्या होगा, लोअर टू हायर राइज 1.428, don't say minus. Okay, so your answer is 1.428, so it is 11.428 volt. I got VOC 11.428 volt, right? Now next step is what, find RI. Second step, step 2, find RI. How to find RI? For finding RI, clear, this voltage source will be shorted. अगर ये शॉर्ट है तो 10 ओम भी शॉर्ट हो जाएगा, राइट. This is 1. This RI we have to find between these 2 points. Okay, here 2, this is 4. Okay, and this will be point open circuited. Current source will be replaced by opening it, voltage source will be replaced by shorting it. For finding RI, we will remove all energy sources, right? So RI between A and B, you can say this 2 and 4 are in series, 6 ohm, clear, 6 like this, and this is 1 ohm. Now you can say 1 and Ri equal to what, 1 and 6 parallel, so Ri equal to what, 1 into 6 upon 1 plus 6 equal to 6 by 7 equal to, I am going to do it, 6 divided by 7, I am going to use the calculator, I am getting 0.857, 0.857 ohm, that is the Ri. I got it. I got Ri. Now what is IL? Ohm's law, sorry, Thevenin's theorem. Ohm's law के Thevenin's theorem क्या बोलता है, VOC IL equal to VOC upon RI plus RL. VOC कितना है, I got it, 11.428 upon RI कितना है 0.857 plus RL is what, RL कहाँ है ये 5 ohm, RL equal to 5. Find the current through 5 ohm. So 5 plus 5 equal to this divided by what, 11.428 equal to this, inverse of this equal to 1.95. I am getting 1.95 ampere. That is the answer I am getting. IL equal to 1.95. Okay. So step क्या है? We have to find VOC 11.428. Then we have to find RI this. Then find IL. Okay. So this is the example number 1. I am rubbing it. Sorry. Next problem, example number 2. This is the example number 2. Find the current through 30 ohm resistance by using Thevenin's theorem. Find the current through 30 ohm. What is the 30 ohm? This is the 30 ohm resistance here. I have to find the current through 30 ohm. Step number 1 क्या है? Steps 1 क्या है? Remove 30 ohm and find VOC, open circuit voltage. We have to remove 30 ohm by opening it. Okay, so I'm going to draw. Okay, just wait. Here it is given this 10 IY. It is depending on this
this IY is not given, this 10 IY is given, but IY actually यहाँ दिया है, it is given, please correct it. This problem में ये दिया है कितना है IY, it is given है. Okay, so I'm going to remove the 30 ohm resistance and find VOC. So this is 50 volt source. Okay, this is 800 ohm, IY is given. Okay, this is the voltage source of what, plus minus कितना है 2VY, this is known. This is 10 IY, and this point is open. Find VOC. This is 15 ohm. Okay. Now this is the diagram we got it. We have to find potential difference between these 2 points. So can I say VOC equal to VCD? Yes, voltage difference between these two equal to same VCD. Now इसका मतलब we have to find the voltage between here. And now what is the VCD equal to 50 into current? 15 ohm into current. कितना करंट आ रहा है? अच्छा ये बताओ, जस्ट टेल मी व्हाट इज द करंट हियर? जीरो. व्हाई? बिकॉज अगर ये सर्किट से ये सर्किट लिंक है, यहाँ से क्लोज पाथ नहीं है, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा. कभी भी याद रखना, अगर यहाँ से करंट जा रहा है, वापस कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा. सो ऐसा नहीं कि सर्किट करंट दे रहेगा. सर्किट मस्ट बी कंप्लीट. सो ऑलवेज करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द लिंक. क्लियर? इसका मतलब ये है कि वट एवर द करंट इज कमिंग हियर, same current will come here. Clear? Up to D point. Zero. Why? It is because it is open. So whatever the current is coming, it will go in this way. यहाँ पर लिखा है, sorry, plus minus V Y. So okay, VCD equal to क्या है? V by this voltage VCD is nothing but V by. Okay, this is given equal to what? 15 into sorry, 15 into what? Current. Current कितना आ रहा है? 10 IY. So and this is minus 10 IY. Why it is minus? Because current always flows from higher potential to lower potential. यहाँ current lower to higher जा रहा है, ऐसा जा रहा है. So minus. So I am getting VOC equal to VY equal to minus 150 IY. I got it. Okay. Where IY equal to what? IY कहाँ है? It should be IY. हाँ यहाँ है. IY equal to क्या होगा? ये IY कितना है? 50. वहाँ का suppose this is connected to ground. So what is the potential is 50 minus this potential कितना है? 2V upon R 800. Current equal to V, potential difference divided by this. This value we will put here. So Vy equal to what? Minus 150 into Iy is what? Iy equal to कितना है? 50 minus 2Vy upon 800. So I am going to put the value here. So 800 Vy equal to minus 7500 minus minus plus 300 Vy. Okay, so ये वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा. So you will get 500 Vy equal to minus 7500. So Vy equal to, that is VOC. Vy equal to what? Vy equal to VOC equal to what? You will get minus 15 volt if you solve it.
So Vy equal to 15 volt. I am not interested in magnitude. Sorry, sign. I am interested in magnitude. So VOC I got 15 volt. Okay. Now second step, find the step 2. Yes, step 2 क्या है? Find Ri. I told you already in the last presentation, when the network consists dependent sources, यहाँ पर तो दो dependent sources हैं. When the network consists dependent source, we can't find Ri directly by shorting it or opening it by removing the energy sources, right? So Ri equal to क्या होता है? VOC upon ISC in when the network consists dependent source. So यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? Find ISC. Find ISC. ओके, ISC कैसे निकालेंगे? दिस इज शॉर्टेड, राइट? सो दिस इज 50 वोल्ट, दिस इज आई वाई, दिस इज 800 ओम, प्लस माइनस 2 वी वाई, टेन आई वाई, ओके, 10 आई वाई, this is 15 ohm, this is plus minus Vy, or this will be shorted. This current is flowing ISC. अच्छा ये बताइए, ISC equal to what? Whatever the current is coming here, what is the current here? Zero. मैंने I told you earlier, यहाँ पर ही बताया था, यहाँ का करंट ओपन है, यहाँ से तो लिंक है, तो लिंक में से करंट फ्लो नहीं होता. सो वॉट एवर द करंट इज कमिंग हियर 10 आई वाई, पूरा का पूरा करंट यहाँ आएगा, करंट यहाँ डिवाइड होकर कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा. यहाँ कितना जाएगा? जीरो. क्यों? जब इसके पैरेलल में पाथ शॉर्ट है तो पूरा का पूरा करंट जाएगा. सो आई एस इक्वल टू व्हाट? 10 इंटू आई वाई. पूरा का पूरा करंट यहाँ से चला जाएगा शॉर्ट पाथ से. यहाँ जब यहाँ से शॉर्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ और यहाँ, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है ना. सो वी वाई क्या है हियर? वी वाई इक्वल टू व्हाट? 15 वोल्ट. नो, डोंट टेक दिस, याद रखना. दिस 15 वोल्ट कब था? जब सर्किट ओपन था, इसको ओपन रखा था. जब शॉर्ट किया है तो भी 15 रहेगा. नो, यहाँ का वोल्टेज बोलो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है. वी वाई कितना है? जीरो. शॉर्ट है ना. सो हियर वी वाई इज जीरो. Please don't say 15 volt. Forget this step. Okay? Okay. So Vy is 0. Okay. So Iy कहाँ है? ये Iy यहाँ पर, यहाँ पर. What is Iy? Iy equal to 50 minus 2 Vy. 50 minus 2 Vy upon 800. Potential difference, this is 50, this is 2 Vy upon 800. वो Vy कितना है? 0. So कितना आएगा? इक्वल टू 50 अपॉन 800, right? Iy. Okay, so IS equal to what? IS equal to 10 Iy. So 10 Iy 10 into 50 upon 800. So I am getting 500 upon 800, 5 by 8, 0.625 ampere. I got it, ISC. So what is the value of Ri? VOC upon, I'm going to use here only. I have a place here, so I'm going to use here. Okay, यहाँ यूज करता हूँ. So what is the value of Ri? VOC upon ISC. VOC कितना है? 15 वोल्ट. This is VOC is 15 वोल्ट. ISC कितना? 0.625. 0.625. So I am going to use the calculator. 15 upon 0.625. Yes, it is 24 ohm. I got Ri 24 ohm. So what is the value of IL?
आई एल इक्वल टू क्या होता है VOC अपॉन RI प्लस RL. Okay, VOC is what? 15 volt. RI कितना है 24 plus RL was given 30 ohm. So I am getting this answer IL equal to I am getting IL equal to 0.277 0.277 ampere. That is the answer. Okay, so in this way you can solve the problem. Your concept should be clear. Dependent sources, इसका मतलब है problem is not difficult. Your concept, if it is clear, you can get it. And problems are really very simple. Okay, I'm rubbing it. One more problem I'm going to talk. Example number 3. Find the current through branch AB using Thevenin's theorem. This branch AB. Okay. So actually you can say what is the type of problem. यहाँ पर given क्या है? Given source है. और बीच में इस सोर्स के इस साइड की मे बी 10 लूप्स आर देयर बट दे हैव रिमूव्ड व्हाई क्योंकि वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में कुछ भी है इट इज रिडंडेंट दे कैन रिमूव इट ओके नो प्रॉब्लम सो पहला स्टेप क्या है रिमूव RL and find open circuit voltage, right? So I'm going to remove, this is V1, this is the given source, you can say here this is source, dependent source I have given 9V1 minus 9VA, 9 कॉमन लिया है तो 9V1 minus VA, so 9V1 minus 9VA, okay? And here this was 10K, 10K. Okay, and this is the potential AB. So this is the voltage developed here is VOC. So can I say VOC equal to VA? Yes, why? Because अगर यहाँ open है तो what is the current flowing here? Zero. अगर if it is open circuit in a loop, so what is the current zero? इसका मतलब है यहाँ का जब zero current है तो यहाँ का voltage drop कितना होगा? Zero. Voltage drop zero, so potential of this point and this point will be same. So VOC equal to VA, right? Equal to, can I say equal to this voltage? Yes, यहाँ का voltage और यहाँ का voltage भी same होगा. Equal to what? 9V1 minus 9VA, right ना? भाई यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है क्योंकि नो ड्रॉप. ये 9VA यहाँ आएगा तो प्लस, so 10VA equal to 9V1, so VA equal to this divided by 10, so 0.9 V1, that is VOC. So I got VOC equal to 0.9 V1. It is in terms of supply voltage. Without doing anything, I got it, VOC. Second step क्या है? Find RI. And RI equal to क्या होता है? VOC upon ISC. We know in case when the network consists of dependent source, we can't find RI directly. So when the network consists of dependent source, we have to find ISC. So find ISC. कैसे करेंगे? This is the source plus minus V1. Clear? Plus minus 9V1 minus 9VA. This is the source, supply source. Okay. This is 10K, 10K, VA.
this is shorted. So current ISC is flowing here everywhere. Okay, so if you write the KVL, क्या आएगा? Source 10 plus 10, 20K into ISC equal to what? 9V1 minus 9VA. बराबर ना? V equal to IR. So I don't want answer in terms of VA. So 9 here VA इक्वल टू क्या है? आई वांट आंसर इन टर्म्स ऑफ V1. क्यों? V1 इज ए सप्लाई वोल्टेज है, बट VA नहीं चाहिए. वेयर VA इक्वल टू व्हाट? यहाँ का पोटेंशियल क्या है? यहाँ का पोटेंशियल क्या है? ग्राउंड जीरो. यहाँ का पोटेंशियल जीरो. यहाँ का पोटेंशियल VA. इसका मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है? VA इक्वल टू व्हाट? 10K इंटू ISC. यहाँ से ISC फिल हो रहा है ना, तो VA इक्वल टू व्हाट? 10K इंटू ISC. तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं इधर. सो 9V1 minus 9 into 10K ISC equal to 20K ISC. So ये उधर जाएगा तो 9V1 equal to what? 90 और plus 20, 110K ISC. Hence ISC equal to what? 9 upon 110K. 9 into V1. 9V1 upon 100K, that is ISC. I got it. So once you know ISC, you know VOC, you can find RI. What is RI? VOC upon ISC. VOC कितना है? 0.9 V1 अपन ISC कितना है? 9 V1 upon 110K. So V1 will be cancelled. ये 10 आएगा. So you will get 11K. बराबर है? 110 ऊपर जाएगा. So 11 upon 9. Okay, 11K. So RI, I got 11K. So what is the value of IL? IL equal to VOC upon RI plus RL. VOC is what? VOC is equal to 0.9 V1 upon RI plus RL. RI कितना है? 11K. RL कितना है? 10K. Okay, so it is 11K plus what? 10K. So I am getting 0.9 V1 upon 21K. That is the answer I am getting it. Okay, so that is IL. So I got RL equal to 11K plus 10, 21K. Okay, so 0.9 V1 upon 21K. That is the way of finding the current. So please see here, I have taken 3 numerical based on the Thevenin's theorem. Later on also I am going to take few more numerical. Okay, so we will try to solve few more numerical later on, but your concept must be clear. So please read from book also, clear your concept, and then later on it will be very simple. Okay, I'm rubbing it. Okay, thank you very much.